Therefore, x and y is equal to -1 and 0. -1 and 0. ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट, क्या आप लोग ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं? आप लोग, आपका टॉपिक भी है ग्राफ है, इसी का दूसरा नाम क्या है? फंक्शन। ग्राफ का दूसरा नाम क्या है? फंक्शन। फंक्शन मीन्स क्या है? रिलेशन बिटवीन x and y with a definite rule is known as the function। आप लोग पढ़े 11th क्लास में किया था आपने फंक्शन, अच्छी बात है। तो लिख लीजिए हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं तो कौन लोग बताएंगे? हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू प्लॉट द ग्राफ, क्या क्या पॉइंट्स है बताइए ग्राफ प्लॉट करने के लिए? जानते ग्राफ प्लॉट करना? ठीक है, कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं? हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। टू प्लॉट द ग्राफ, टू प्लॉट द ग्राफ। कैसे ग्राफ प्लॉट करते बताइए? मेथड क्या ग्राफ प्लॉट करने के लिए? फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x and y। दिस इज नोन एज द tabulation of data। The first step is the tabulation। This is the tabulation of data। Means we calculate y on the basis of x, where x is independent and y is dependent। जानते हैं आप लोग, x is independent, किसे कहते हैं independent? How to define the term independent? x y दोनों वेरिएबल्स हैं। How to define the term independent variable? तो किसी को जानते हैं आप लोग? Which moves without any restriction। तो लिख लीजिए, this is a variable, this is known as independent variable। This is your independent variable, means which moves without any restriction। In different mathematical operation, now come to y। Here y is known as dependent variable। Now the question is how to define the dependent variable। कैसे डिफाइन करते हैं? बताइए, ये तो जानते हैं आप लोग, ये किस पर डिपेंड्स करता हुआ है? ये तो बताना होगा। Which depends on chosen value of x। जो आपने x का वैल्यू चूज किया, सपोज x का वैल्यू आपने 0 रखा, तो y किस पर डिपेंड करेगा? दैट इज x when x is equal to 0। x का वैल्यू आपने 2 रखा है, तो y किस पर डिपेंड्स करेगा? y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x when x is equal to 2। दैट इज द chosen value of x। which depends on chosen value of x। For example, let y is equal to x। If x is equal to 0, what is the value of y? 0। x is equal to 1, y is equal to again 1। x is equal to 2, then y is equal to, x is equal to 3, then y is equal to, if x is equal to -1, then y is equal to, x is equal to -2, then y is equal to, x is equal to -3, then y is equal to,
and this is known as tabulation of data. This is known as the tabulation of data. Tabulation